Hello, learners. Welcome to this session for the program Certificate in Fashion Design. I, Dr. Divya Ojha, Academic Associate from School of Vocational Education and Training, IGNOU, welcomes you all. So, learners, today's topic of discussion is Introduction to Certificate in Fashion Design program. This particular Certificate in Fashion Design program it's offered from School of Vocational Education and Training, IGNOU. So this session is for the learners and the viewers, for those who are interested in the fashion design and they have some skills in themselves and want to enhance their skill and want to make their career in the fashion industry. So we will today discuss all the details about this particular certificate in fashion design program. And for discussion today we have with us program coordinator Professor A.K. Gaga sir. So I welcome you sir. And we will discuss all the basic details of this particular program so that if you can learn what this program is about and you can if you are interested you can join this program. So let me brief about this certificate in fashion design program, what was the main aim behind creating or developing this program for the learners. So in the present scenario, fashion designing or the fashion design or fashion industry is one of the field which has a wide range or wide ample opportunities for the person who has creativity in themselves so that they can use their creativity or the skills to make a career. So it has a very good opportunity for the career and also for the self to become self dependent. So one who has a good creativity in designing or creating or have some interest in the designing or the fabric or the construction of the garment, they can choose this particular field to make a good career. So as we know that in the present scenario this particular fashion design industry or the fashion industry is the most income generating industry, because from the first sourcing of the raw material to making the final product, it is a very labor intensive industry, and at every step there is an scope of or there is an scope for the opportunity for making a good career. So the one who after joining this program or learning this particular certificate in fashion design program, you will learn about the basic details of the fashion design, how you will develop the pattern, how you can make the garment, how can use the basic techniques of computers that you can use in your designing process, and you will know the details about the fashion industry, and also you will have to have a aspect of good communication skills from this particular program. So this was a brief introduction, and with this objective this particular program certificate in fashion design was developed to make you aware about different basic techniques, the computer aided techniques or the detailings of the fashion industry, and to enhance and to know what creativity skills you have in yourself. So this was a brief introduction of the program. Now I request sir to please apprise our learners with the learning objective. They might have a question that after joining this program, what skills or what they will enhance in themselves. So what are the basic learning objective of this program? Thank you, Dr. Divya. You have briefed about the objective of this particular certificate in fashion design program. I also welcome all the viewers and learners who are viewing this program and planning to register and take admission for this particular program. For those students and those viewers who are interested to register for this particular program, उनके लिए एक जानकारी देना चाहूँगा. अभी हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो ऑन है. आप इग्नू के
जो वेब पेज है www.igno.ac.in पे जाकर आप इस प्रोग्राम की डिटेल, जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है हमारा स्वयं एडमिशन पोर्टल, उसमें जाइए और इसको रजिस्टर कर सकते हैं। और दूसरा जो जानकारी जो डॉक्टर दिव्या जी ने अभी बताई रिगार्डिंग की इंडस्ट्री के बारे में, फैशन इंडस्ट्री के बारे में, आप देखिए कि लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, particularly if you see the pre-COVID period and after कोविड पीरियड, जो इंडस्ट्री का बूम है, हमारी जो डेवलपिंग इकोनॉमी है लाइक इंडिया और चाइना, इनमें काफ़ी फैशन इंडस्ट्री का जो बूम आया है कि ये एक्सपेंशन इन कंपैरिजन टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इफ़ यू सी यूरोपियन पार्ट और एडवांस कंट्रीज लाइक यूके, यूएसए, ऑल दैट कंट्री, इंडिया और चाइना में ये काफ़ी ग्रो हुआ है फैशन इंडस्ट्री। और ये भी दूसरा इशू ये निकल के आया है जो हमारी R&D जो रिसर्च है कि काफ़ी एडवांस कंट्री में और इंक्लूडिंग इंडिया में भी जो फैशन इंडस्ट्री है, उनकी स्किल मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट है वो फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है, और वो लेटेस्ट डिजाइनिंग के और लेटेस्ट प्रोडक्ट जो वो डिज़ाइन करते हैं, जिसकी वजह से जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है। क्योंकि अभी आपने कहा कि इसमें क्या क्या स्किल्स हैं, सो ये जो बेसिक स्किल जो रिक्वायरमेंट है टू टाइप्स की हैं। एक तो वो स्किल मैन पावर जो एम्प्लॉई किसी फैशन इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और दे वांट टू इन्हेंस देयर एग्जिस्टिंग स्किल विद द न्यू स्किल्स रिक्वायरमेंट। सो इन दैट केस हमारा ये प्रोग्राम जो सर्टिफिकेट इन फैशन डिजाइन प्रोग्राम है, जो स्कूल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इग्नू से लॉन्च किया जा रहा है, ये उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। सो सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है कि नेशनल लेवल पे भी जो नई न्यू इंडस्ट्रीज आ रही हैं और उनको एक न्यू स्किल मैन पावर की ज़रूरत है। क्या स्किल्स हैं, क्योंकि हम एक जॉब स्पेसिफिक स्किल्स की बात करते हैं और एक पर्टिकुलर जनरल स्किल्स की बात करते हैं। ये दोनों टाइप की स्किल्स हमने इस प्रोग्राम में जो इंडस्ट्री और एकेडमिया की एक्सपर्टाइज टीम ने इनकॉर्पोरेट की हैं, जो इसलिए इस प्रोग्राम की जो इम्पोर्टेंस है वो कैटर नीड करता है जो सप्लाई है मैन पावर और डिमांड मैन पावर की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड फ्रॉम द इंडस्ट्री किस टाइप की स्किल मैन पावर उनकी ज़रूरत है, तो ये प्रोग्राम हमने इस ढंग से डिज़ाइन किया। दूसरा क्वेश्चन जो आपने कहा कि लर्निंग आउटकम क्या है, लर्नर्स इस प्रोग्राम को पढ़ने के बाद या कंप्लीशन करने के बाद वो क्या क्या स्किल्स और क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो हमने ब्रीफ किया है कि बेसिक नॉलेज एंड अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द फैब्रिक्स और फैशन डिजाइनिंग पैटर्न्स, and then we also focus the basic scenario of a fashion industry, our third course what we will discuss in detail also. So ये सब चीज़ें हमने मिलके हम ये कह रहे हैं कि आफ्टर स्टडी दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम्स लर्नर्स विल बी एबल टू गेट द अवेयरनेस अबाउट दी फैशन डिजाइनिंग। एंड बिकॉज मैंने अभी जैसे कहा, पहले भी हमारे प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हमारे डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं इस सर्टिफिकेट फैशन डिज़ाइन प्रोग्राम में, जो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, उनकी वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी है कि वो कोई डॉक्टर है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, पीजी कर रहा है, वो अवेयरनेस के लिए कि फ़ैशन पैटर्न या फैशन डिज़ाइनिंग क्या क्या होती हैं और फैशन की इंडस्ट्री क्या होती है और फैशन की हिस्ट्री क्या है हमारे नेशनल लेवल और यूरोपियन और अदर अक्रॉस द ग्लोब। सो ये हमारी जो हिस्ट्री है वो जो हमने कोर्स 1 में डिटेल डिस्कस किया है, वो सब चीज़ें ये 4 ऑब्जेक्टिव फ्रेम किए हैं जो 4 कोर्सेज में हमने फर्दर डिवाइड किया है। आई थिंक लर्निंग आउटकम जो आपने पूछा कि लर्नर्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस प्रोग्राम में रजिस्टर करने के बाद और क्या क्या वो स्किल, क्या थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज वो लेगा, ये हमने जो कवर किया है। लेकिन लास्ट पार्ट जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी की बात करते हैं। जैसे हमने कहा कि इस प्रोग्राम जो CFD प्रोग्राम है फैशन डिजाइन का, इसका ऑब्जेक्टिव, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है इनहेंसिंग द एम्प्लॉयबिलिटी। सो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो हमने दी हैं और उसके लिए स्पेसिफिक एक कोर्स को भी हमने ऐड किया है जिसका नाम है कम्युनिकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। वो कम्युनिकेशन स्किल्स और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स तो आपको हर एरिया में चाहिए इन जनरल, बट इन वोकेशनल एजुकेशन पर्सपेक्टिव और particularly in fashion design perspective we have given in detailed discussions of this. That's why this we are expecting after completion of the this program learner will be able to get these 4 learning objective what we discussed so far. Yes. So I think the objective of the particular program is clear, and on the basis of that, student can plan that how they can join.
So now it is for the information of student that the minimum eligibility of this particular program is 10 plus 2 from any stream or equivalent. The student, those who have completed their 10 plus 2 from any stream, they can join this program. And at present, the medium this program is offered is English, and it is also being translated in Hindi, and student will be able to study this particular program in Hindi medium also. And fees of this particular certificate in fashion design program is rupees 5000, and it is for the duration of 6 months, and for the maximum it is 2 years. Like if you join this program, it is the minimum for the 6 month that you have to complete your certificate in within the 6 month. But in any case you do not complete, or you are not able to complete this particular certificate program in 6 months, you will be getting 2 years to complete this particular program. So this was a basic detail about the eligibility and fee structure of the program. Uh, Now request sir to please tell about, because as this particular certificate in fashion design program, it is a 16 credit program. So as we said 16 credit, student have a question now, what is the credit? So what is the credit system? Please apprise our learners about the credit system and what is the learning hours, everything. Thank you. I think I would like to add more information what you just said about the minimum eligibility and medium and the program fee. I think learners also may be expecting, सर हम एक इंडिया के किसी ऐसे स्टेट में रहते हैं तो वहाँ मैं बैठ के कैसे स्टडी करूँगा, और दूसरा जो है क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि स्टडी सेंटर कहाँ कहाँ अवेलेबल्स हैं, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है मीडियम, क्योंकि बच्चे जो डिफरेंट लैंग्वेज से आते हैं, हमारी गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि सभी रीजनल लैंग्वेज में हम सभी कोर्सेज प्रोग्राम को ला रहे हैं। इसी तरह से ये प्रोग्राम जो है एक कोर्स वाइज रजिस्ट्रेशन भी होता है। जो हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं जिन्होंने एडमिशन हमारे बैचलर डिग्री प्रोग्राम में लिया है, और उसमें हमारा कोर्स 3 जो है इंट्रोडक्शन टू, अभी हम डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में, वो हिंदी मीडियम से ऑफ़र किया जा रहा है। सो ऑलरेडी वो हिंदी में ऑफ़र किया जा रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मीडियम बेसिक इंग्लिश में है, बच्चे वो हिंदी में असाइनमेंट दे सकते हैं, और हिंदी में और रीजनल लैंग्वेज में भी आप अपने उस कोर्सेज को जो हमने असाइनमेंट्स को अटैम्प्ट कर सकते हैं, और टर्म एंड एग्जामिनेशंस जो अभी डिटेल डिस्कशंस होगी। क्वेश्चन जो आपने कहा कि क्रेडिट सिस्टम क्या है, फिर हम इशू जो हमने अभी हाईलाइट किए हैं उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। वो है दी 1 क्रेडिट इज इक्वल टू 30 आवर स्टडी। तो मोस्टली अभी नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क भी हमारा यूजीसी की गाइडलाइंस है, और स्कूल एजुकेशन का भी बहुत जल्दी से ये क्रेडिट फ्रेमवर्क जो आने वाला है, और वो अलाइनमेंट नेशनल लेवल पे किया गया है। 1 credit hour is equal to 30 hours of study. What is the purpose for 30 hour each credit? So 16 credits are there. 16 is mean 480 hours of study, 6-month course. So 6-month course, what will be learners will be doing? Because we are providing self-learning materials to them, and we expect ki 1 week study. 1 week study is equal to 1 block, what we call. Our program structure is like this. So 1 hour study, 1 credit study, 20 hours, 1 block study in a week, as like 5-hour session in formal system, and 6 sessions or 6-day week, or 6 hours per day study, 5 days week, 30 hours. So 1 week study we calculate in audio and distance learning framework, that is block 1, which 1 credit students has to study, and 16 credit is like distributed. And further details of the credit system is that key completion of the program, learners have to give the theory, practical and term and examinations. So 70% we have a theory, and 30% is assignments in particularly, but one course to course this credit framework, theory, practical varied, and we will discuss here in the next slide. That is, see, the student sports service, what I said key learners will be asking. We have a network of regional centers, and this 3-tier system is there from IGNOU. Those students those who want to register, and sports service will be provided through our regional sports service divisions, and that is regional student sports service centers, as well as study centers and work centers. There are different categories of delivery system is there.
For further detail, you can download or you can visit our IGNOU webpage. List of regional centers in across the country available. The most important point is there कि if students face problems, suppose somehow they are not able to get these sports services, we at a school of vocational education training, and we already are in touch with every students, and we mail them our CFD emails and CFD at the.igno.ac. We are in touch with them, and in addition to that, we are coming through live sessions like now we are live, and we are providing sports services and our counseling sessions in different platforms. This is the student sports services network is concerned. कि student after getting the register of the student admissions of any programs, ये CFD प्रोग्राम में करने के बावजूद नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहते हैं सर क्लासेस कहाँ लगेगी, सेकंड सर हमारा स्टडी सेंटर कहाँ है, ये दो क्वेश्चंस की क्वेरी बहुत आती है. सो फर्स्ट क्या है कि ये जो क्लासेस हैं ये एक रेगुलर प्रोग्राम नहीं है, ये डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स है, एंड स्टूडेंट्स को सब जो स्टडी मटेरियल इग्नो प्रोवाइड करता है वो उसको खुद पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जब उसकी कोई प्रॉब्लम्स या इश्यूज हैं, वो प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए हमारे यहाँ काउंसलिंग सेशंस हैं. काउंसलिंग सेशन भी 3 टायर सिस्टम्स हैं, रीजनल सेंटर्स में, स्टडी सेंटर्स में, और हमारे जो लाइव सेशंस जैसे अभी हम यहाँ हैं, ज्ञानवाणी रेडियो प्रोग्राम्स और ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे अवेलेबल है, और SOVT यूट्यूब EMPC यूट्यूब में और नेटवर्क पे हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो स्पोर्ट्स सर्विसेज और एकेडमिक काउंसलिंग जो है वो प्रोवाइड की जा रही है. ये इंस्ट्रक्शनल ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच है जो हम स्टूडेंट्स को इस प्रोग्राम के थ्रू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में पढ़ाया जा रहा है. अब आप विस्तार से देखिए जो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है. इसमें सेल्फ लर्निंग मटेरियल जैसे हमने कहा कि स्टूडेंट्स को हार्ड कॉपी हम प्रोवाइड करते हैं. सपोज वो उनके पास ऑप्शंस हैं कि सॉफ्ट कॉपी, वो भी हमारे ज्ञान कोश इग्नू के वेब पेज से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. देन ऑडियो वीडियो रिकॉर्डेड कैसेट्स जो अभी हम जो है आप ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, इग्नू के वेब पेज में लिस्ट अवेलेबल है. देन वी सिस्टम्स हैं, असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल, ज्ञानवाणी रेडियो, व्हाट आई सेड. इन एडिशन टू दैट we are also providing through OER, open education resources. We providing students to link. You see latest what happens. For instance, we have a designing of pattern making. We always refer, and what is the latest design has come out in the market, and how fashion designer designed that particular design, and through different platforms our students, our trainers, we call, and they came to know how to design this. We have a computer aided design courses, and through OER and MOOC they can see and view, that is free of cost available, and they can see the latest design. But my point is ki we have to see their this particular designs, but learners we expect, industry expect कि you have to use your own innovative and ideas to designing the, to give the tough competition to the counterpart of the different fashion industry. Industry looks innovative people for this particular program. So instructional system, we have blended approach. We are coming through print media, electronic media, as well as online Google Meet live sessions in addition to what we are doing. But the theory, practical, assignment, 3 component, student has to study themselves and come out. Last point is practical, what we discuss in the course 2, that is the 2 credit course, what we say 50% theory and 50% practical. So the practical activities we are providing to the students by learning by doing. They have to practice this at their own, while we have given some instructions in this practical manual. And then online or whatever study center, regional center conducting these counseling sessions on the spot, learners to be evaluated in this practical, that is internal assessment system, and the schedule of the practical will be decided by the respective regional centers or study centers, or communicated by the respective geographical regions scatter students to the regional center and study center. I think I covered this instruction system is very what the students keep in asking, and then you have to submit assignments. Yes. That is very important. Students have to submit the assignment before the term and examination, and every examination we give the assignment schedule. For that schedule you have to strictly follow, and in addition to that you see 70% theory and practical 30%, but you need to score at least 50% marks in each component, theory, practical, as well as in assignment. It is not कि you score 70% in theory and not in assignments and practical. This is vocational program, and theoretical programs you can have
this particular assignment. But in assignment as is compulsory because this is distance education teaching learning process. Each course has different weightage on assignment and practical and their own course structure, because our course 1 and course 2, that is, you see, is having Practicals. the practical component at 25%, and rest is 75% theory, 25 continuous assessment and 50 term and 10% continue, and 40 and 50 we have given here because is we've given focus more on On the hands-on hands-on training. experiences. This course requirement is there. I think introduction to fashion industry we are given 70% terminal examination and 30% continue, and similarly communication and enterprise. This is the broad our structures of this particular teaching learning process of this fashion design program. But what we see, the as luckily we are having Dr. Divya here. She's expertise in fabrics and pattern makings and all that. So one of the most important points what I learned during this teaching learning process is this scatteredness to kindness to identification of the fabric, different Fabric, kind of yes. fabrics. So this industry introduction to fashion industry, first two unit we focus on that, but in pattern making we have given theory and then learning by doing Practicals, yes. practical. This basic point is very important and uniqueness of this particular certificate fashion design program. I did the curriculum analysis of this particular course with the existing courses in this country, and we found the already recognized courses with the sector skill councils and other, and they have different perspective. They said कि more focus on practical, we agree, and that is face to face environment, but in distance learning we give through teaching through our instructions. So in through instructions, and then there are a lot of questions industry asks, is it possible to enhance the skill through distance learning? But this particular program responded very well to learners, because after getting this certificate programs from our this fashion design from our School of Vocational Education Training, with hard efforts of our team, like we are sitting here both of us, and in addition to that expertise team and industry team, we incorporated the skills what we are discussing. What we expected कि इस प्रोग्राम को करने के बाद लर्नर क्या सीखेगा, वो कौन कौन सी स्किल्स होंगी, ये जो हमने अभी ये जो प्रैक्टिकल की जो स्लाइड दिखाए हैं कि आपका कोर्स 2 BFD 72, और जो डेमोस्ट्रेट किया है बच्चों ने, प्रैक्टिकल किया है, कुछ कलेक्शंस हमने भी अपने स्कूल में जो रीजनल सेंटर या स्कूल में हमने देखी है, वो एक यूनिक वोकेशनल स्किल प्रोग्राम जो है ये डिज़ाइन हुआ है, और काफ़ी इसका जो मोटिवेशन बच्चों को मिला है, और कहीं एम्प्लॉयबिलिटी की बात हुई है, कोई एंटरप्रेन्योर बना है, कुछ और क्वेश्चंस जो हैं जो स्टूडेंट्स पूछते हैं बार बार, एम्प्लॉयबिलिटी की बात हो गई, असाइनमेंट की बात हो गई, प्रैक्टिकल की हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ के ऊपर भी बात करते हैं। सर Yes. मेरे मेरे को असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लगे हैं, या मेरे प्रैक्टिकल का शेड्यूल मुझे नहीं Yes. मालूम है, या वो कह रहे हैं कि सर मैंने थ्योरी का मैं पेपर तो दे चुका हूँ, मेरा एग्ज़ाम जो है असाइनमेंट के मार्क्स मैं नहीं दे पाया, तो क्या करूँगा। उनके लिए मैं ब्रीफ एक लाइन का मैं रिप्लाई देना चाहूँगा कि आप हमारे इग्नू के वेब पेज में जाइए, और हमारी इस CFD प्रोग्राम की प्रोग्राम गाइड है, हाउ टू स्टडी दिस प्रोग्राम, जिसमें किस प्रॉब्लम के लिए, किस इशू के लिए किसको कांटेक्ट करना है, उसका ईमेल डिटेल भी दी हुई है। यदि असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लगे हैं तो आपको रीजनल सेंटर और असाइनमेंट सेक्शन से बात करनी है, हेडक्वार्टर्स में, और उसके बाद प्रैक्टिकल के मार्क्स लेंगे तो प्रैक्टिकल सेक्शन है हमारा और रीजनल सेंटर से, और अदरवाइज आप स्कूल से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ये स्मॉल स्मॉल इश्यूज भी उस प्रोग्राम गाइड में हमने Mention डिटेल किया. में दी हुई है। और आई डोंट थिंक कि बच्चों को जो स्पोर्ट्स सर्विसेज के कोई इशू हैं वो, और इंडिविजुअली अटेंशन हम भी देते हैं, और रीजनल सेंटर्स और जो स्टडी सेंटर्स हैं वहाँ पे इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा रही है। तो एक क्वेश्चंस डॉक्टर दिव्या आपसे पूछना चाहूँगे, प्रैक्टिकल के बारे में बताएंगे कि जो हमने अभी पीछे एक्सपेरिमेंट किया है कि उसको ऑनलाइन से कैसे किया। तो लाइक आपने बताया कि कोर्स 1 एंड कोर्स 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट एंड फैशन डिज़ाइन प्रोग्राम, इसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट है. So it is in the continuous assessment process. So there are two in the study material you will find at the last that there is a practical workbook, and there are certain activities assigned, and every activity has some steps we have given that you have to follow, and you have to practice that particular activity yourself. And at the time of assessment you will be given some questions based on that particular activities that you have to perform
whether we have offered doing it online or offline. So when we are, it is your practical will be conducted online. You will be asked to perform that particular activities being online with your video on, and do perform that. You have to prepare that samples of the stitches or the seams, and in the first you have to design, you have to do the sketching, and that particular samples you have to submit, and then your evaluation will be done. So in this process we conduct the assessment session for the practical of both the courses. Yeah, bilkul, you are rightly stated because it's a very important part. Lot of questions Yes. asked. No, regional centers, we have our guidelines Yes. where they conduct the practical session, Practical their own sessions. centers also and study center also, and they also guide the students how to conduct this practical session. Counselors during the counseling session are evaluating. But most of the important point जो आता है कि इसकी employability क्या है ना, तो काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यार हमने पहले भी डिस्कस किया है कि किस किस एरिया में जॉब मिल सकता है. तो फैशन डिजाइन, इफ़ यू सी द एज ए प्रोडक्ट प्रोफेशनल fashion designer, what are the fashion designers? Costume, shoes, and then accessories designer, embroideries, and so on. In addition to that, also we new industries are Yes. coming up very innovative job profile for the students. They are giving the design and product developer in through computerize. Yes. Computer will help you design, but idea should be, we have artificial intelligence, and I think artificial intelligence also have some today, just I before coming this session I came to know some guidelines in government issues, so how to use. And this industry today debate is going on. Some are the what are the artificial intelligence, ChatGPT or other being platforms, which I also try to experiment something, and we come out very innovative ideas. So that will also help us to in fashion design industry. So use of artificial intelligence for designing the pattern making in the context of the local need of the customer. So second point is fashion marketing also. Marketing researchers you can become, and there's a lot of industry in government and big international. If Yes. you go big malls, and our course 3 is discussing. So as a fashion merchant and a fashion journalist or visual merchant and boutique owner, lot of, and as a I've seen lot of industry and fashion designer have opened their own boutiques. Also they are practicing. Yes. Also they are working job. So three job together. One of the fashion designer of our course, and she had opened their own outlet, and she's also working somewhere, and she also designing. So Yes. three roles one person is giving. And then I asked to how you identified all the three skills yourself. She said ki I was having earlier prior learning or prior skills, but when I have gone through this particular certificate program from IGNOU, I understand the theory, Yes. and then I enhance my skills, because entrepreneurship skills whatever we have explained that helped me to set up my boutique. And second, she said ki I was having my family tradition to stitching and all that, so in pattern making designing I tried to experiment myself, and my own rural areas, that product I designed. And third, working, and because she's also working some this garment house in nearby Haryana Panipat, I interacted with them. So that three job roles in one course, a very interesting, which I had been not recorded in our. I'm still working on that part of whenever I am having this job time and all that. In this way, we design this. So over the whole, I conclude as a learner after getting this certificate, you will be having production management and visual presenter, public relation officer, and fashion journalist and fashion communicationist. It will be decided your talent as a role supervisor or manager. I hope you enjoyed this session. If any query, you can mail at cfde@igno.ac.in. Thank you. Thank you.